We are live now. ठीक है. Assalamu alaikum everyone. And this is Tuba Zahid from Direction. And today we have with us Hammad Siddiqui Sahab. Welcome Hammad Siddiqui Sahab. So Thank you Hammad very much, Siddiqui Tuba. Sahab is a global brand name in LinkedIn coaching. He has coached over and mentored over 30 in over 12 countries, and his experience is for 36 years. He's known for transforming lives of hundreds of people around the world, and he has revamped several institutions in terms of growth and sustainability. In the past, Hammad Siddiqui Saab has worked as head of trade and investment at UK consulate between promoting British businesses and private investment. He has also worked with the Center for International Private Enterprise. It's a non-profit affiliate of US Chamber of Commerce. He has decades of experience in working South Asia, Turkey, US, Canada, you name it. And his experience is involved in developing and implementing projects. Currently, he is a LinkedIn and career coach at Career Guru. Career Guru is an organization that he founded back in 2020. And Hammad Saab, he is the only Pakistan-based LinkedIn coach who is endorsed by LinkedIn Canada. So let's welcome Hammad Saab. Hammad Saab, it's an honor to be hosting you on our Direction page. And how are you? Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. It's a pleasure to join in a movement. Direction, I know, is actually revolutionizing the concept of skill-based learning in Pakistan, and this is kind of a dream come true for me, working with a great team at Direction and under the leadership of Nabil. I've known Nabil for many years, and it's just amazing to be part of a community which is a learners community itself. So thank you for inviting me. Yes, and rightly said, Nabil Saab ki leadership mein, it's a dream for all of us, like the team as well, to be working with him and to like really endorse, like understanding his vision. We're still struggling understanding him, lekin hum bas we're just following his dream, and he's just he's bringing all of us together. So that's that's huge for us. So Hammad Saab, we're going to speak on LinkedIn now, because that's why we're here. So there's so much that we can do on LinkedIn, not just in terms of building a network, but also getting such connections and getting leads and acquiring clients, and more importantly, building your own personal brand. That's the power of this platform, LinkedIn. And you can build your entire CV, and जो आप like दे रहे हो, तो you're just like push कर रहे हो तो companies में कि ये मैं हूँ. LinkedIn is like that full platform जिसके अंदर you just have everything, and it gives you more credibility. So my first question is more two-part. Firstly, why is LinkedIn important for Pakistan? And following this up, lately we have seen there's this huge knowledge gap in Pakistan when it comes to using LinkedIn optimally. So sorry about the noise. And so what do you think LinkedIn, what do you think can Pakistanis do to really tap this gold mine that is LinkedIn, and how mastering the art of LinkedIn will help Pakistanis grow? So basically, a lot of Pakistanis do not really appreciate that LinkedIn is owned by Microsoft. Microsoft took over LinkedIn in 2016. Prior to that, it was known as a networking platform or as a job search platform. But 2016 के बाद से there has been a transformation. There is a transformation in everything. I mean, the new LinkedIn, or the way it is evolving, is very different to what it used to be. So technically speaking, that knowledge gap that you spoke about is the conceptual knowledge gap, as I call it. Conceptually, we still think that LinkedIn is a job search platform. LinkedIn is actually what I call, it's an opportunity platform.
So, by just changing this one word from job search to opportunity, it completely changes the whole scenario. Opportunity means opportunity for everyone, whoever is on LinkedIn. And it's like, some people, I mean, if you buy a bicycle, for instance, like I was thinking of something different, but let's buy a bicycle. You spend money, you bring in the bicycle, and you don't know how to ride it. What will happen? Bicycle will be of no use to you, right? So when we talk about the optimal utilization of an opportunity platform, we need to actually understand how it works. And in most of the cases, it's very random. People create their profile and just leave it there. And expect something to happen. Something will never happen if we are not actively using our LinkedIn profile, if we haven't optimized it, if we don't use LinkedIn's tools that are available for free. We actually, generally speaking, in Pakistan or in communities like Pakistan, we try to treat LinkedIn as more like a Facebook or an Instagram. And it doesn't work that way. LinkedIn has a secret set of algorithms. LinkedIn's algorithm, if you read algorithm reports, you will not find a report on LinkedIn because LinkedIn's algorithm is a secret. The engineers team sit together very often and they tweak that algorithm. So That's news to me too. Yeah, so that 1% does not get the benefit of it. And from creating a portfolio point of view also, if you, I mean, of course, I'm sure there are going to be freelancers and SEO experts and digital marketeers who will be watching this video, this live session, or maybe later on the video. For them also, if you know exactly what you want from LinkedIn, you will get it. So from that perspective, the knowledge gap, the conceptual knowledge gap has to be filled in first before going towards more specifics about what tools LinkedIn has. Going Facebook, back to the basics. Boost a post and you will reach out to people. On LinkedIn, how would you do that? So, so there's a very different way of approaching LinkedIn as compared to Facebook or any other social media platform. Right. So we have a question in the comments. Bilal Rahim, he's asking, what can I do if a LinkedIn member is outside of my network? This is a more specific question, but if you want, you can answer it, or maybe you can talk about the basics first. Yeah, right. So on LinkedIn, you would have 3 levels of network. Your first degree connections, your second degree connections, or your third degree connection. If this person is your first degree connection, of course, that first degree means that if me and Tuba are connected on LinkedIn, we are first degree connections to each other. Now, if Bilal is Tuba's connection, but Bilal is not my connection, Bilal is my second degree connection. If Bilal is neither my connection nor Tuba's connection, Bilal is my third degree connection. So that's kind of a framework on which LinkedIn works. If you are my second degree connection, you can still communicate with me. You can still send me a connection request if I haven't blocked it, or you can at least follow me. If you are my third degree connection, you may not be able to send me a connection request, but you can still follow me. Once you follow me, you start building your credibility and your conversation with me through my content. So this is a complete strategy, which is very different. I'll keep saying it, very different to any other social media platform. So you can still connect with someone through another mean, even if that someone is not in your first or second degree connection. Well, not in second degree connection. If even a third degree connection, somebody who doesn't want you to connect with him, it's a restriction, you can still follow and start building that network. Right. Okay. So Hammad Saab, I would like to move on to your masterclass now. I would like to ask more questions about it. So as if anyone doesn't know, we are introducing Hammad Saab's masterclass like we've introduced previously. His masterclass would be called Exploring Global Opportunities on LinkedIn.
So, Hamasa, would you like to elaborate on like what is it about? What key milestones will you be covering, and what will be the key learning takeaways and outcomes? Right. So, and this is really very, very exciting for me. As a Pakistani, I always wanted to train a lot of Pakistanis so that they could actually explore opportunities on LinkedIn. This is the right time to invest, first of all. I mean, obviously, the question would be why should I take LinkedIn as LinkedIn training, or why should I join the masterclass? What would be the benefit? And which are very valid questions. Now, what I say is that particularly from the freelancers' point of view, if we take that, if we bifurcate all these communities that are out there, from freelancers' perspective, if you're a freelancer and you're using any other platforms such as Upwork, Fiverr, that's fine. You can still earn decent income. I think people are doing much better on Upwork if they're more technical, if they are looking at project-based, like the more like a long-term projects. Fiverr is also okay. But what happens is that all these platforms deduct hefty fee from you. It's like 20%, 25%, right? You make $1,000, you have to pay them $250, right? Very true. Which means what? Which means that your price, so what you're getting in your pocket is less than what you charge. And your client also pays them. Which means if you are on an independent platform which does not charge you anything, you can actually earn that project and reduce your price and become more competitive. Simple, right? Simple math. So what I say, those students that are already in my courses, I said, you just continue what you're doing. But now is the time that you start experimenting on LinkedIn as well. Because on LinkedIn, and this is again something that I've coined and something that I want people to realize, is that all these platforms are not sellers' platforms. If you think that you're a digital marketer and you're selling your product on these platforms, that's okay. They've provided you a marketplace, but these platforms are buyers' platforms. They support buyers, not sellers. So if I'm a buyer and if I have an issue with Tuba's service, I can simply do a bad review and Tuba's reputation will go down the drain. She's not going to get any more clients. Things will be very different. So you are more or less in a shackle with these platforms. So I don't say, okay, if you're making money there, okay, continue that. But if you don't explore other platforms, alternate, you're putting every egg in the same basket, then of course, there could be an issue. So that's one thing. From the corporate side, your community, your knowledge sharing, your branding of social professional persona or personal branding really makes a lot of difference. Now, if you are a corporate professional and if you're only on Facebook, that's fine. That's a fun place. Globally, if you see, World Bank का chief LinkedIn के ऊपर है, Oprah Winfrey LinkedIn के ऊपर है, Gary Vee LinkedIn के ऊपर है, तो भाई आप क्यों नहीं है, सवाल ये पैदा होता है, right? Which I mean they are doing something, right? मैं ट्रेनिंग करा रहा, ट्रेनिंग तो नहीं है सच, वो मेरी प्रेजेंटेशन थी पाकिस्तान प्रोफेशनल फोरम, एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमारा कनाडा के अंदर कम्युनिटी है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था लास्ट वीक. तो हमारा सबसे बड़ा जो बैंक है, प्राइवेट बैंक यहाँ पे, वो है रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, आरबीसी. और मैंने उनको ये दिखाया कि आरबीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव इज ऑन लिंक्डइन. Now, if RBC's chief executive is on LinkedIn and using LinkedIn, your argument is that we don't have time, or we don't want to learn, or we don't know how it works. आप खुद ही nullify कर रहे हैं उसको, ना? We're good with paying Upwork and Fiverr more money. कुछ भी आप कर रहे हैं. तो corporate side के ऊपर आपको अपनी profile की build करना बहुत जरूरी है, because people are looking for people. Like headhunters are looking for opportunities के वो connect करें right candidates के साथ. इसी तरीके से जो हायर लेवल के ऊपर आप बात करें, सी स्वीट की बात करें या सीनियर मैनेजमेंट की बात करें, वहाँ पे यूजुअली जॉब्स नहीं अनाउंस होती. पीपल कनेक्ट एंड पीपल देन इनवाइट यू फॉर अ कप ऑफ कॉफी एंड देन दे ऑफर यू द जॉब. दिस इज एट लीस्ट व्हाट आई गॉट, द वे आई गॉट माय जॉब्स.
सो अपना सोशल प्रोफेशनल पर्सनल बिल्ड करना लिंक्डइन तो बहुत जरूरी है। फिर आप सवाल ये आ जाता है, जैसे आज मैंने आपको बताया मैं टीचर्स को ट्रेन कर रहा था कैसे आपने जी करना है। सो आइसोलेशन इज अ बिग किलर पाकिस्तान में और हमारी सोसाइटीज के अंदर। पीपल आर आइसोलेटेड, दे थिंक दे आर नॉट बट दे आर एक्चुअली, बिकॉज उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन सीख नहीं कर रहे हैं। हम्म तो मैं आपको एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस वक्त पे। अब वो पाकिस्तान में भी खासा पॉपुलर लोग बात करते हैं उसकी, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो डिवॉर्स के अंदर हर साल होता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर इस दफ़ा जो हमारी बिग फोर कंपनीज हैं, डिलॉयट, ईवाई वगैरह, उन्होंने एक तो दे डू देयर राउंड टेबल्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, दे ट्राई टू लर्न कि फ्यूचरिस्टिकली क्या होना है। ठीक है एंड द वर्ड दैट आई वांट टू एक्चुअली emphasize upon is futuristically. And they talk to these companies, you know, what is going to happen, like कोविड आ गया चला गया, whatever, वैक्सीन भी आ गई, लोग ठीक भी हो गए, अब क्या होगा? So they said कि by 2026, which is only 3 years away from us, or almost 3 years away from us, most of the companies will be earning the revenue from products, services, and business that have not been yet created. अब इसका क्या मतलब, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। इसको ट्रांसलेट ये करते हैं कि वो कंपनीज जो कि ग्लोबल बड़ी कंपनीज हैं, वही कह रही हैं कि 2026 तक ऐसे बिजनेस से पैसा कमाया जाएगा, उन सर्विसेज से पैसा कमाया जाएगा, उन प्रोडक्ट से पैसा कमाया जाएगा जो इस वक्त क्रिएट भी नहीं हुई है ना। इसको और आप डीप जाइए इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि द रेवोल्यूशन दैट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम नाउ until 26 and beyond is going to be rapid. And I think probably rapid is not the right word, you know, incremental, exponential, exponential whatever. It's going to be rapid. It's going to be rapid. Now, if we don't become part of that revolution, or the rapid activity that is happening, will be left out. Very simple, right? अब आप बात कर रहे हैं Gen Z और Gen Alpha की, right? अब the future belongs to Gen Z and Gen Alpha, और sorry, millennials and Gen Alpha. तो बात ये है कि अगर हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे, और एज इफ वी आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, दैट एज ग्रुप, और हम वो टूल्स यूज नहीं कर रहे जो अवेलेबल हैं, देन यू नो वी विल बी लेफ्ट आउट। अब आते हैं कि जी लिंक्डइन इसमें क्या रोल प्ले करता है। लिंक्डइन जी जो मेजर काम कर रहा है इस वक्त पे, और बहुत अरसे से कर रहा है, और इनफैक्ट सारी ये टेक्नोलॉजी कंपनीज कर रही हैं, वो कर रही है काम जनरेटिव एआई के ऊपर काम। नाउ I am not a technical person. I've only learned it, what generative AI is and how is it going to work. So Dan Shapiro जो कि LinkedIn का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उसके जाके आप वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारी हैं। Recently, he has actually started speaking more about generative AI. So what LinkedIn is doing, they're using generative AI to learn about your behavior. So if Tuba you know, writes content about digital marketing, and or within digital marketing, if she writes more about SEO or inbound marketing or whatever, and this is the kind of content she's connected with, or वो सारी की सारी, so इसका उनका behavior record हो रहा है। And if I'm looking for such services, and if I have the similar behavior, that generative AI is going to create that module and implement that module onto my query. Now think about it, it's become so simple, right? And if you're on LinkedIn and if you're not doing anything, you're not giving enough data to LinkedIn's, like whatever machine, whatever जो भी learn कर रहा है पीछे, so जब नहीं दे रहा तो यहाँ कैसे match होगा? That's the reason you need LinkedIn. Long answer to your short question, but future is in your hands. That's very well put. आपने importance बताई है LinkedIn की पाकिस्तान के लिए, especially these days, the economy, the political situation. Pakistan has to come out of its isolated self. हम यहाँ पे freelancers, by the way, हम freelancers की अब I don't know किस number पे हम, but we were third, fourth world list पे, and this just shows क्योंकि freelancer in itself, it's a very isolated occupation. आप लैपटॉप, आप एक मशीन के साथ ही सिर्फ काम कर रहे होते हो, and as much as like AI, these softwares are coming up, but not just me, but the whole ecosystem of this workspace, it's becoming more human. हमें like
in this day and age, we need more humans like operating these AI softwares. The other day, I'm a designer, a graphic designer. So the other day, I was reading on this article that said, okay, AI is, we're losing jobs because of AI. But really, we're just like becoming, we have more resources now. Matlab, I will be using these AI softwares to make myself more efficient and more effective. Like मेरे designs और ज़्यादा effective हो जाएंगे. Maybe I'll need more people under me creating such softwares. So this is why I think वो businesses जो के जिससे revenue निकल रहा होगा by 2026, this is how we'll create those, and we need more humans for this. So yes, पाकिस्तान के लिए this is more important. मैं पूछना चाहूंगी कि with all these learnings and जो self write कर रहा है algorithm LinkedIn का भी, so that 1% is not on the top. What do you think? How are you breaking down your masterclass for your masterclass members? जी बिल्कुल इस पे जरूर बात करते हैं आपको मैं एक so it's like a gift. I like to give gifts to people that I speak with, and you're I a appreciate designer. that. I think you should go and enroll with so Microsoft has just launched its designer tool, by the way, only last week, और वो है design.microsoft.com. So you have to go and enroll in it, and they will see if you qualify, and they give you the access. So very Right. few people around the globe has access to it. So go and Right. look at it. And वो जो आपकी बात है ना, देखें, जब मैं आपको बताऊं, मेरी एज है और मैं काफी दुनिया देख ली अब तक. जब फैक्स मशीन आ रही थी, जो टेलेक्स ऑपरेटर्स थे, तो आपको तो अभी पता भी नहीं होगा टेलेक्स क्या चीज होती है. आपकी एज में आपने कभी टेलेक्स मशीन देखी भी नहीं होगी. सो जब फैक्स आया तो टेलेक्स ऑपरेटर्स वर थिंकिंग कि वी आर गोइंग आउट ऑफ जॉब. जब Right. मैनुअल टाइपराइटर था और जब इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर आया, तो people who were like doing manual typewriting, they were thinking कि they're going out of job. जब अब तो टाइपराइटर किसी घर में शायद होता भी नहीं होगा. Everybody uses laptop और desktop. तो मैसेज ये है कि कभी भी आप टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं भाग सकते. You have to be apace with technology. You have to go with technology and learn it. So the key words for anyone who is kind of इस वक्त पे डर रहा है, देखें, upskill, reskill and be pragmatic. If you're using three things, you're upskilling yourself, you're reskilling yourself, and you're being pragmatic, you will be successful because you are going to stay within that space जो कि available है. और नहीं करना तो ठीक है, गुजारा हो ही जाता है. But if you really want to, अच्छा, दूसरा आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया आइसोलेशन का. और उसकी एक वजह है. बिफोर आई जंप ऑन टू दिस, देखिए, मैं क्योंकि लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर कॉर्पोरेट सेक्टर पीपल एज वेल एज फ्रीलांसर. नाउ पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को बिजनेस सिखाया जाता. जी. फ्रीलांसर्स को फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है. बिल्कुल. नाउ फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस, राइट? हाउ डू यू डू इट? आपके 4 पीस क्या है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें, या अपना यूएसपी कैसे डिफाइन करोगे. तो कॉपी कैटिंग इज प्रीटी कॉमन. सो उन लोगों के लिए जो आप देख रहे हो फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसिंग को एज अ बिजनेस सीखें. फ्रीलांसिंग को एज अ फ्रीलांसिंग मत सीखें. देन यू विल बी मोर हैप्पियर. देन यू विल बी डूइंग थिंग्स द वे यू शुड डू. ओके, आप एंजॉय करेंगे. यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर रियली. दैट्स वन थिंग. अच्छा, हमारी अब बैकग्राउंड करते हैं हम लिंक्डइन के ऊपर. जी. हमारी लिंक्डइन के ऊपर जो मास्टर क्लास होगी, उसके बेसिकली हमने जो फाउंडेशन डाली है वो 4 पिलर्स हैं उसके. और जो कुछ भी होगा उन 4 पिलर्स के अराउंड सराउंडिंग्स के अंदर ही होगा. जो कुछ भी हम करेंगे, हम पहला काम करेंगे जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल करेक्शन करेंगे. आप जो भी आएंगे, कॉन्सेप्चुअल करेक्शन वही जो कि हमने शुरू में बात की कि lot of people are just completely confused के LinkedIn काम कैसे करता है. So that conceptual correction will provide you like a starting point of okay, ठीक है जी, अब मेरा दिमाग खुल रहा है. I can now see opportunities out there, right? Using okay, ये tools मैं तो यूज नहीं करता था. फिर हम स्पेसिफिक टूल्स के ऊपर आएंगे, और हम स्पेसिफिक टूल्स में आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि लिंक्डइन के 55 फ्री टूल्स अवेलेबल हैं. किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इतने टूल्स नहीं मिलते. 55 फ्री टूल्स अवेलेबल हैं फ्री प्रोफाइल के ऊपर. तो हम उनको यूज करना सीखेंगे. हम ये सीखेंगे कि रेलेवेंस एंड टारगेटिंग कैसे बिल्ड किया जाता है.
So जैसे कि मैंने जनरेटिव एआई की बात की, अब अगर आप रेलेवेंट नहीं है और टारगेटेड नहीं है तो ये जनरेटिव एआई कभी भी काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर में हैं, जैसे आप लाहौर में हैं और आप वाघा बॉर्डर के ऊपर गई हैं और वहां जाके आपने तस्वीर खींची है, फौजी के साथ वीडियो बनाई है, वट एवर, एंड यू पोस्टिंग दैट ऑन लिंक्डइन, यू आर एक्चुअली नॉट गिविंग लिंक्डइन द राइट कंटेंट। ठीक है, so that's how this whole concept about relevance and targeting will work. And then we will also cover content targeting, content creation for LinkedIn, and also the networking and networking tools. तो इस तरह से हम ये 4 स्पेसेस को कवर करेंगे इसके अंदर, एंड इट विल बी एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यू नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आज के दौर के अंदर देयर इज सो मोनोलॉग लर्निंग डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। मोनोलॉग लर्निंग को उस जमाने में होती थी कि बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स हैं, वहाँ लोग खड़े हुए लेक्चर दे रहे हैं। इट्स ऑल कन्वर्सेशनल, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह एंगेज होते हैं। डिस्कशन बेस्ड। तो ये बहुत एक जी डायलॉग की सूरत में किस तरीके से आप अपनी लर्निंग करते हैं। सो ये एक हमारा जो इसकी जो ये लर्निंग मेथोडोलॉजी होगी उसकी, या टीचिंग मेथोडोलॉजी, दोनों एंड के ऊपर अगर आप देखें, दैट्स गोइंग टू बी फिनोमिनली डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी। So you've explained your teaching methodology और क्या क्या होएगा. What would, like, how do you think you would describe के your students would be able to do? Like, what would the learning outcomes be for them? अच्छा देखिए, अमूमन जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस लिहाज से कि मुझे बहुत लोग सवाल पूछते हैं। मुझे यकीन करें, फेसबुक पे तो इतना सारा, वो मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरी टीम देख रही होती है, मगर मैं भी जाके देखता हूँ। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, मतलब ये मुझे कैसे बेनिफिट करेगा। लर्निंग आउटकम का मकसद यही होता है ना कि ये मुझे कैसे बेनिफिट करेगा। Yes. तो एक साहब ने मुझे कल पूछा, एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू, सर विल आई गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर द कोर्स? तो मैंने उनको कहा कि मैंने We've कहा heard that a lot in our skill राइट, center. राइट, राइट। सो दैट्स अ माइंडसेट, राइट, Yes. दैट्स अ माइंडसेट। बात ये है कि सर्टिफिकेट आपको उस वक्त काम करता है या करता था जिस जमाने में लोग सर्टिफिकेट देखते थे। Hmm. आज के दौर में पीपल आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। So if Tuba says that she's a digital marketing professional, and if she can't do digital marketing, then she is of no use to me, right? So the biggest learning outcome, in a very shortest possible manner, जो मैं आपको explain कर सकता हूँ, कि you will be able to transform your approach on LinkedIn and you will start targeting opportunities. Very simple, no rocket science. एक जो बहुत important phenomena जिसको मैंने focus किया है, जिस पे मैं बहुत vocal बात करता हूँ, and if you allow me to say that as well, is I do not market my courses, चाहे दुनिया में कहीं पे भी मैं मार्केट कर रहा हूँ, based on a dollar sign, because I feel that's dishonesty. लोगों की greed को trigger करना is probably the worst thing that you should do. It's good for marketing, you make more money, but it's dishonesty. So अगर आप गौर करें, अगर आप इंजीनियर हैं और एक क्लास में बहुत सारे इंजीनियर हैं, सारे इंजीनियर जब पढ़ के निकलते हैं, सबकी टेक्निकली स्पीकिंग नॉलेज लेवल सेम होता है। टेक्निकली स्पीकिंग उन्होंने सेम किताबें पढ़ी हैं, सेम एग्जाम्स दिए हैं और पास किया है, मगर सबकी अर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। सो एज मेंटोर्स हमारा काम ये है कि हम अपना सब कुछ उनको दे दें जो हमें पता है। उनकी लर्निंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि वो कितना इंप्लीमेंट करते हैं। वेरी सिंपल। That's मैं very आपको true. हैरान को एक एग्जांपल दूं। मेरा एक स्टूडेंट है जो कि अभी उसने लिंक्डइन पे रिसेंटली अपना सिलसिला शुरू किया। इससे पहले वो लिंक्डइन नहीं यूज करता था। वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर है लड़का। 30 डेज उसको टोटल यूज करते हुए थे और वो ऐसा ऐसा चीजें बिल्ड कर रहा था। एंड वन डे ही सेंट मी अ मैसेज सेइंग, यू नो सर, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट आई जस्ट वन a long-term contract with a company, $1,400 a month. I don't think he needs to do anything else. $1,400 महीने के अगर मिल रहे हो पाकिस्तान की मार्केट में, and डॉलर 300-350 का है, then you don't need to do much, right? बिल्कुल. So, and again, I say, okay, a lot of students
don't achieve that because they don't implement. Those who implement, they get the benefit. Implement and consistency as well. वो तो जरूरी है. वो तो, you know, it's not a short-term race. It's not a 100-meter sprint. It never will be. It never was. Okay. Our life, our career is not a 100-meter sprint. It's a marathon. So when you run a marathon, you have to be prepared more strategically. क्योंकि पता नहीं कितना लंबा रन करना है. और so anyone thinking कि मैं वाकई अपनी लाइफ को as a marathon रन करना, मतलब some of my students are as old as I am, right? You know, accountants हैं या auditors हैं या CFOs level के लोग हैं. They are transforming their lives. You know, they say, okay, you know, this is what we have been doing. हम digital side पे जाना चाहते हैं, क्या करें? And they come and join in. So, you know, it's very interesting. It's very exciting. In fact, as you can see, you know, I get excited when I talk about LinkedIn and how LinkedIn is transforming lives We're seeing for those people who want to implement. और आपने जो पहली बात की थी सर्टिफिकेट वाली, देयर इज अ कमेंट हियर जो कि उसी के ऊपर है. Shabir Isa, he's saying that I'm a Google certified digital marketer, and I also took Sir's LinkedIn course, but still no client. So it's all about implementation. Yeah, very simple. मुझे बहुत लोग लिखते रहते हैं कि क्लाइंट नहीं मिला, तो वो जिनको मिला है उनको कैसे मिला, उन्होंने भी तो ये काम किया, right? So it's about practice as well. Like Hartifa, you don't hit the mark every time, but it's about like implementing and being consistent with it. Yeah, and as a freelancer, treat it as a business, right? You know, you can be certified, but you know, do you have the right level of skill that is required out there in the market? How do you price it? You know, what is the competition like? You know, how do you compete? So it's like, you know, आपकी skill बहुत important है, जिसके बगैर आप नहीं कर सकते. But do you know how to market that skill? Do you create content? I mean, do people engage with your content? Are you engaging with other people? It's multiple things. So course lena is essential because this will be the foundation. If you don't know, you don't know. If you don't take the course, you would never know, right? But now, once you have taken the course, the challenge becomes very different. You have to implement it. Definitely. And here direction as well, Hamara, like, no matter what course it is, we just start with setting the mindset right. Like developing this entrepreneurial mindset कि आपको हम skill तो सिखा रहे हैं, इसके पीछे नहीं पड़ जाना. आपने अपने bubble से निकलना है और आपने एक team बनानी है, आपने एक system create करना है. Like वही approach के आपने freelancing को एक business के तौर पे देखना है. So that's very well put. So this is all about the masterclass. Hammad Saab, thank you so much, and thank you so much for your time. And inshallah, registrations are open for a masterclass. We'll be beginning the classes soon, inshallah. And anything that you would like to add? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट डोर इंडिया के अंदर millions of people are using LinkedIn effectively, and they are actually minting money. और अपने कैरियर को आगे लेके जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. इवन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो स्टार्टअप्स बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं लिंक्डइन को अपनी ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए. मुझे रीच किया था आपसे कुछ 4 महीने पहले के स्टार्टअप ने topmate.io, जो कैलेंडली का कंपैटिटर है इंडिया के अंदर. 3 दोस्त मिलके अपनी जॉब छोड़ के स्टार्टअप शुरू किया. यंग फेलो, मैंने उनको इसमें से को अंकित को उसको वो भी किया, इंटरव्यू भी किया. तो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर. एंड द प्लेटफॉर्म दैट यूजिंग टू कनेक्ट विद पीपल लाइक मी इज लिंक्डइन. तो सिर्फ हमें ये सोचना है कि हम कैसे, एक टूल है. मतलब एक मिसाल अक्सर देता हूँ कि आपके पास अगर एक हथौड़ी है, हैमर है, तो आप हैमर से आप कील भी ठोक सकते हैं, हैमर से किसी का सर भी फाड़ सकते हैं, हैमर से आप दीवार भी तोड़ सकते हैं. हाउ डू यू यूज वो टूल, आपने कैसे यूज करना है. अगर आपको वो पता है कैसे यूज करना है, तो फिर आप उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे. आप छोटे हैमर से बड़ी कील नहीं को ठोकेंगे, बड़ी कील के लिए बड़ा हैमर लेंगे. तो कितने इफेक्टिवली आप काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है.
rest of it, will happen. It's ये कोई कह नहीं सकता कि नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता. आप कहीं ना कहीं लैक करते हैं, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं. आप मुझे पता है, कुछ लोग जैसे मुझसे आज सुबह भी कोई साहब पूछे तो मैंने जाके उनको रिव्यू किया. मैंने कहा आप देखें, यू नॉट राइट, यू नॉट क्रिएटिंग एनी कंटेंट. हाउ वुड यू ब्रांड योरसेल्फ? हाउ वुड पीपल नो? यू आर ओनली रीपोस्टिंग थिंग्स. सो बिल्ड योर कैपेसिटी टू स्टार्ट पुटिंग आउट कंटेंट. सो हम ये सब कवर करेंगे अपनी मास्टर क्लास के अंदर. सारी शाइनेस को निकाल के बाहर फेंक देंगे. हम लोगों को सिखाएंगे आपने वीडियो कैसे करना है. हम लोगों को ये भी सिखाएंगे आपने लिंक्डइन पर लाइव कैसे करना है, न्यूज लेटर्स कैसे बनाने हैं. और ये वो सारी चीजें हैं जो कि उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करेंगी. थैंक यू सो मच. और आई वुड लाइक टू रीइटरेट जो आपने शुरू में बताया था हमें कि लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है, आप कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म ऑफ लाइक जॉब हंटिंग नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अपॉर्चुनिटीज. एंड अपॉर्चुनिटी इज सच अ ह्यूज वर्ड, और इसके लाइक नेवर एंडिंग रोड है. हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर. एंड लाइक यू सेड, एल्गोरिदम इसका डजंट इज नॉट बायर सेंट्रिक, मतलब जिस जो क्लाइंट सेंट्रिक होता है. So it's like the same level for everyone. So we can do so much on LinkedIn. Thank you so much, Hammad Saab. Thank Thank you you so very much much for for your inviting time. me.